हमारे साथ मौजूद हैं आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डॉक्टर अजीम सरवर। डॉक्टर अजीम ने आज तक जो अचीवमेंट्स की हैं, व्हाट वाज द सीक्रेट सॉस, जो नए आजकल ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनके पास क्या टिप्स हैं? हाउ हैव यू बीन एबल टू मेंटेन योर प्रोडक्टिविटी सो फार? जब तक आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में नहीं डालते तब तक आपको पता नहीं चलता कि और क्या क्या सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजा हुआ है। Whatever you can dream, you can achieve that and you can even go beyond that. I see you're wearing quite a cool shirt, Lunarover. NASA has this Artemis program. जो रॉकेट है वो लॉकहीड मार्टिन का है, जो व्हीकल होगी वो जनरल मोटर्स की होगी। छोटी सी डिग्री ले लें, डिग्री ना भी लें, you're all right. You just need to learn the skills and you need to get better at it. तो आप इसको कैसे देखते हैं? Because you said कि हमें आगे पढ़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए। What is it that I could have done better? अब आपने ये देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोस्ट लाइकली आप कहाँ फॉल करेंगे। Get a good foundation that you can at least stand on and then go ahead. After that you want to take all the risks that you want in the world. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमारे साथ मौजूद हैं आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डॉक्टर अजीम सरवर। ही इज़ बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स और ये जनरल मोटर्स में होते हैं एज अ लैब ग्रुप मैनेजर एंड इज़ वर्किंग ऑन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम इनसे अभी बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं इनको जानता हूँ एज अ वेरी हाई अचीवर और वी हैव बीन टुगेदर सिंस द यूनिवर्सिटी। So I want to understand a few things about कि डॉक्टर अजीम ने आज तक जो अचीवमेंट्स की हैं, so what was the secret sauce, इन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, और इसके साथ साथ हम अपने व्यूअर्स के लिए इनसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो कवर कि जो नए आजकल ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनके पास क्या टिप्स हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो योर स्टे इन पाकिस्तान आई होप इज़ गोइंग वेल? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सलेंट, वेरी नाइस। सो डॉक्टर अजीम, सबसे पहले तो आई थिंक मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो चीज़ मुझे आपकी काफ़ी अरसे से, आई थिंक वी हैव नोन ईच अदर मोर देन 20 years, तो जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है आपकी, वो आपकी एक तो ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्टिविटी है और वो प्रोडक्टिविटी हमने अपने एजुकेशन दौर में भी देखी माशाल्लाह, और उसके बाद व्हाट आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग इन द प्रोफेशनल लाइफ एंड आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एट व्हाट यू डू माशाल्लाह। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट हाउ हैव यू बीन एबल टू मेंटेन योर प्रोडक्टिविटी सो फार? बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए आपने अली, सो आई ट्राई कि उसका मैं जवाब दे सकूं। सो उसको प्रोडक्टिविटी नहीं मैं ऐसे देखूंगा, इट्स रियली अ क्वेस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। वो एक्सप्लोरेशन बेसिकली यही होती है कि यू डिस्कवर समथिंग अबाउट योर सेल्फ और फिर आप ये देखते हैं कि यार अल्लाह ताला ने आपको और क्या दिया हुआ है, कहाँ पे आप थोड़ी सी और बाउंड्री पुश कर सकते हैं। और जब तक आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में नहीं डालते तब तक आपको पता नहीं चलता कि और क्या क्या सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजा हुआ है। सो इट्स मोस्टली अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड दैट डजंट कम चीप। Again, as I was saying, right, you have to make yourself uncomfortable, or that really has been the goal all along. और अभी इंशाल्लाह जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है, we'll keep trying and pushing my boundaries. It's not about pushing anybody else's boundaries. I was talking to some students yesterday at NUST, and what I was really trying to convey to them is that, you know, it's you versus you every day. Always has been, and that's what it is. That makes a lot of sense. I can vouch for it that if you target to make today better than yesterday, so I think that is incredible. It gives you an incredible energy to perform well today. So Dr. Azeem, I also know that mashallah you are getting better at fitness as well. So you have recently run a marathon and I was quite inspired that you were, I think, number 10th or number 16th or 11th mashallah. So how did you train for marathon and how did you get to this point? What was the journey like? Journey again, it all comes back to it's you versus you, right? Or there is nobody who can inspire you better than yourself. आप लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, लोगों की जर्नी सुनते हैं, which you might actually find inspirational, लेकिन
किसी की भी स्टोरी एग्जैक्टली आपके साथ रिलेटेबल नहीं होती है, किसी के भी सर्कमस्टांसेस एग्जैक्टली आप वाले नहीं होते। जो वाहिद शख्सियत है जिसके सर्कमस्टांसेस आप वाले हैं वो आप हैं। एंड विद रनिंग what it really gives you is के you know your body is tired and it just wants you to stop the nonsense that you are doing, and then your brain tells you कि यार you can go one step further, and you keep playing this game and you find yourself down the road number of miles. और that is very empowering and that's very liberating कि एक चीज़ जो आपने ओरिजिनली सोची थी कि आप नहीं कर सकते, you just did it by pushing your own boundaries, right? और वो जो फीलिंग आपको मिलती है, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, where you are exceeding your own expectations day after day, वो ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर है बल्कि वो आपको एक ड्राइव और एनर्जी देता है कि यार यू नो देयर इज़ वे मोर आउट फॉर मी, जिसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट यू कैन टैप इनटू। सो मैराथन का जर्नी यू नो 2 years ago when I started to run I could barely run 2 miles, और उस वक्त कभी इस दिमाग में आया नहीं हुआ था कि यार आई कुड रन अ मैराथन लाइक 26.2 miles, इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस। But when you get into it and you realize that in a few weeks, months time, you have come so much farther, you start to have this self-belief that I can go even farther than this, right? So it's not about just fitness, it's about getting that self-confidence, right? Having that self-belief that yaar, I can do more, I can do way more than I originally thought that I could, right? So मैं अपने ग्रुप में भी लोगों को यही कहता हूँ कि whatever you can dream, you can achieve that and you can even go beyond that. Great. No, I think I can, from my experience, I can also, the technique that I use to get better at what I do, I don't get overwhelmed by the ultimate destination. I just want to take the first step, and then step by step I take it, divide and conquer. So I totally agree with you on that. So I see you're wearing quite a cool shirt, Lunarover. So tell us a little bit about, you were mentioning your project, the exciting project you're working at the moment. Right. So NASA has this Artemis program, जिसमें they're going to be putting you know a woman and a man of color on the moon again, and the timeline is somewhere around 2026. Or General Motors is partnering with Lockheed Martin to kind of help NASA get there. जो रॉकेट है वो Lockheed Martin का है, जो व्हीकल होगी वो General Motors ही होगी. I don't know if you know this already or not, but the original moon buggy back in 1971 was manufactured and designed by General Motors. Excellent. So it's not the first time we're doing it again. And this vehicle will be, you know, will have multiple functionality. You could drive it with the joystick. You could have astronauts drive it as well while they're there. The third thing is that it could drive on its own autonomously, right? Nice. So what my group is doing, we are supporting the development of this autonomous functionality on this vehicle. And it's really fascinating because again, you know, it's an off-road vehicle. You're driving in extreme conditions from -70 to 170. अब जो उसकी डस्ट है जिसको आप रेगुलेट कहते हैं, you have to have sensors operating ताकि वो उसके डैमेज से और हैजर्डस इम्पैक्ट से महफूज रह सकें. The gravity is different, like you know you can't go very far fast over a ridge क्योंकि you never know, you might actually land 200 meters beyond that ridge. So all of these challenges they make the problem very exciting. And again, you know, this is something I've never thought that I would be part of. And Allah का करम है, and again that's you know what we started off with कि you might, and in many of the cases you will find yourself doing things beyond your imagination, things that you would think that you were capable of, but here we are. So Azeem, let's talk about a little bit about the philosophical side now. What drives you to achieve these great things, mashallah, you have achieved so far in life? What is your purpose of life?
Achievement तो is a byproduct. You get things as a byproduct, right? It's not necessary that you're out there to achieve something. You're just doing you, right? You're just doing you. और उसमें बस ये है कि whatever you're doing, you just put your heart and soul into it. I don't like to do things half-heartedly. अगर मैंने कोई काम नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा. मतलब ये नहीं होगा कि मैं 50-50 कर लूँ. Because you're investing your life and your time, right? Essentially, your time is part of your life. If you're putting your life into it, it's a transaction. And what you get in return should be worth that part of your life, right? So उसमें achievement तो again Allah Taala की देन है. What you put in is just your heart into things, right? इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल मैं ज़्यादा comment कर सकता क्योंकि there are. I'll give you an example actually. So I got a best paper award for a paper that I submitted in IEEE conference, right? And when I got that award, I was looking at that paper. I was like, this is not my best work, but I got that award. And the only thing that I did was that I was publishing very consistently, right? And I was there in that conference with my paper. Excellent. At least that was the effort that I put in. There have been some papers that were far better in quality compared to this one. But what lands you eventually is consistency. Makes sense. You do you, right? You keep doing. You're not looking for, hey, I want to achieve something, right? So consistency key hai. Put your heart into things that you're doing because again, it's a transaction of your life. And I think that's how I look at things. For me, it's pretty simple. Excellent. Lastly, I would say that what is your advice? As you know that our channel is mainly educating people about business ideas and startups and investments. And I see that your journey is talking about, from your journey in life, we can learn a lot about investing in one's own self and how that can pay you back in years to come. Give some advice to your 20 years old version. What would that be? Because that would be quite useful for people in that age right now. So जो स्टूडेंट्स हैं अभी कल NUST के कैंपस में भी बात हो रही थी. If you're in your third semester, third year or fourth year, I would highly advise to go for graduate studies. What can really help you that I didn't have was कि कोई प्रोफेसर ढूंढें जो रिसर्च कर रहा हो, उसके साथ पार्टनरशिप करें ताकि you can get some exposure of research and get a research paper out. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन लैंडिंग योर सेल्फ इनटू अ गुड ग्रेजुएट स्कूल. और ऑल्सो थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिल जाएगा कि डू यू वांट टू गो फॉर अ PhD, इज इट समथिंग फॉर यू और नॉट. You could just stop yourself at the master's level. So ये एक चीज़ है जो I didn't do, could have done, should have done, and could have helped me in getting into MIT maybe. I got into Stanford but I didn't get into MIT and वो आपको चीज़ें एक खुरक रहती है कि यार okay, what is it that I could have done better? This is at least one thing that I could have done, get a few research papers out. Or go out and explore the world definitely. क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास एक environment है, एक certain perspective है. When you go outside, you are going to interact with a lot of peers from all over the world जो different angles से चीज़ों को देखते हैं, different angles से analyze करते हैं चीज़ों को. आप different cultures का आपको exposure मिलता है and it's really an eye opening and it really polishes you up. आप में tolerance पैदा करता है. You see people with different opinions, different cultures, people who are not like you, right? So yeah, absolutely. That's one thing. Go do some research. Great. So I think I was about to end here, but your answer kind of provoked a point. एक point मेरे mind में है आपकी discussion से कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कल्चर आ रहा है स्टार्टअप्स का और काफ़ी बच्चे इसमें इंगेज हो रहे हैं और उनको जो थॉट प्रोसेस जो आ रहा है ना, एक तबका फ़िक्र ऐसा है जो उनको ये बता रहा है कि आप बुक के लिए ज़रूरी नहीं है अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना.
आप अगर कोई छोटी सी डिग्री ले लें, डिग्री ना भी लें, यू आर ऑल राइट, यू जस्ट नीड टू लर्न द स्किल्स एंड नीड टू गेट बेटर एट इट। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज यू सेड कि हमें आगे पढ़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए। नो, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अली। एंड मेरा अपना भांजा है, वो भी हाई स्कूल ख़त्म कर रहा है FSC, और मेरी उसके साथ भी यही कन्वर्सेशन होती है। एंड ही टेल्स मी दैट, यू नो, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट और बिल गेट्स इज अ ड्रॉप आउट एंड ज़करबर्ग ड्रॉप आउट। बट when we talk about, you know, these kind of things, what we have to keep in mind is कि statistics क्या हैं overall, ये जो हैं इनको हम outliers कहेंगे। Outliers, right? ये I can't follow them, even they can't follow them, right? That's a stroke of pure luck, and you can't just bank your entire career on pure luck. ये सारा का सारा जो जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे होते हैं और हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे होते हैं, is to put yourself in a better position जिसमें आपका एक certain degree तक आपका एक career secure हो जाए। Beyond that you can go and explore and do whatever, but at a certain level जो bare minimum है वो आपको एक certain standard of living kind of guarantee कर देता है, right? और again coming back to statistics, अब आपने ये देखना कि distribution के अंदर most likely आप कहाँ fall करेंगे, right? आप अपने आप को नहीं इसके साथ कंपेयर कर सकते ज़करबर्ग के साथ या स्टीव जॉब्स के साथ, बिल गेट्स के साथ, क्योंकि अगेन दोज आर आउटलायर्स। आप बेस बाकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ही आपको चलना है, बिकॉज दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट लाइकली वेयर यू गोइंग टू एंड अप। आई एम नॉट सेइंग यार यू कैंट बी अ ज़करबर्ग, बट you know, if you look at the statistics, it's almost next to impossible. Indeed, yeah. Right. So that's why it's important to have the basics right. Get a good foundation that you can at least stand on, and then go ahead. After that, you want to take all the risks that you want in the world. Go ahead. Excellent. No, that's quite good advice, and thank you so much, Dr. Azeem, for such engaging and such enlightening discussion today. I really enjoyed our discussion. Thank you very much. Pleasure. So viewers, I think this discussion was quite thought-provoking, and we will be back with similar discussions in future with high achievers and the ones who have really performed well, and उनसे आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं अपने स्टार्टअप्स के बारे में और उनकी प्रोडक्टिविटी से कुछ लर्न कर सकते हैं, हाउ यू कैन बिकम रियली प्रोडक्टिव, व्हाट आर देयर हैक्स जिसकी वजह से वो इतने प्रोडक्टिव बन सके हैं अब तक लाइफ में। सो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। इस वीडियो में कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में उसे आगाह करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।